किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो मैथ्स रिलेटेड, एंड वी कैन स्टार्ट इन लाइक 3-4 minutes. लेट अदर्स ज्वाइन. दो मिनट में शुरू करते हैं guys, ठीक है? Hello, sir. Am I audible? Yeah, you are audible. Tell me. सर मैं ये मिरर इमेज निकालने का सर कोई शॉर्टकट है क्या सर? अभी मैं सर वो काफी लॉन्ग प्रोसेस से कर पा रहा हूँ। मतलब ग्राफ कि का पेपर पर नहीं सर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर। मिरर इमेज निकालने का. क्योंकि लाइन के अबाउट अब मिरर इमेज निकालते हैं ना अपन, हाँ 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 इसलिए हाँ. तो उसके लिए सर अभी मैं क्या कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकाल रहा हूँ, फिर इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल रहा हूँ, उसको मिड पॉइंट लेके उसके बाद निकाल रहा हूँ, तो काफी लंबा लग रहा है मेरे को। क्वेश्चन है क्या तेरे पास? तो क्वेश्चन सर मैंने करे तो थे सर मॉक में, अभी तो है नहीं। ठीक है, मॉक में तो सिर्फ मैं एक तो बारी क्लास के बाद ना एक बारी मुझे मैसेज कर देना ना. ठीक है. तो ठीक है सर। मैं एक दो क्वेश्चन निकाल के मैं. यार आइडिया तो वही है, मिरर इमेज का तो आइडिया वही रहता है कि वो परपेंडिकुलर वाला सिस्टम ही लगाते हैं हम लोग, कि परपेंडिकुलर हाँ हाँ। डिस्टेंस पे लेके फिर उसके बाद हम्म। वो वैसा होता है ना. मिरर इमेज वाला तो वो क्वेश्चन में मैं समझा दूंगा, तो वो फिर बेटर रहेगा. ठीक है, मुझे एक बारी पिंग कर देना क्लास के बाद ना. श्योर सर। एक्चुअली शॉर्टकट तो कुछ नहीं है मिरर इमेज, जहां तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात है, तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी शॉर्टकट. ठीक है, वो इक्वेशन के प्रोसेस से ही जाना पड़ता है. ओके सर। ठीक है, क्लास के बाद बता मेरे को, करते हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. ऑलराइट, सो दिस इज द फॉर्मेट. आई होप यू नो दिस. ऑलराइट, चलो. डोंट आंसर इन द चैट बॉक्स. ठीक है, अपने आंसर्स अपने पास रेडी रखना, एंड देन वी विल डिस्कस आफ्टर 11 minutes. ओके. सो 9:15.
चलो, टाइम इज अप. लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस. फर्स्ट का आंसर कितना आया? फर्स्ट वन इज 2. Yeah, right. This is 2. Second one is 13. 13 is correct. Third one is किसी ने किया है? 33/412. नहीं, I don't think so. Third ka we will see. Okay, let's discuss one by one. 1/18. Nahin, it's not 1/18. Okay, first one. Hold on. Okay, first one. When you see this is a quadratic in mod of x minus 1, right? 2 into mod of x minus 1 whole squared plus mod of x minus 1 minus x. So rather than assuming mod of x minus 1 as p and then doing it, straight away हम देख सकते हैं कि product should be -12, right? Product should be -12 and sum should be 1. So -12 होना चाहिए product, sum should be 1. So it should be 4 and -3, right? Now ये roots जब बनेगा, ये जब roots बनेंगे, 4 and -3 will become -4 and 3. All right. And because there is a coefficient of 2, we will divide it by 2. So straight away we can say that mod of x minus 1, the value of mod of x minus 1 will be equal to -2 or 1.5. Right? किसी को डाउट है तो एक बार लेट मी एक्सप्लेन और उसके बाद पूछना, ठीक है? सो mod of x minus 1 will be equal to -2 or 1.5. Mod cannot be negative, so -2 is rejected. So when we take these two, now we know that this mod of x minus 1 equals 1.5. This will give me two values, right? You don't have to solve it. Exam में solve मत करना क्योंकि question पूछा है how many values of x. So straight away we can say number of solutions would be 2. ठीक है? Question number 1. किसी को डाउट है इसमें तो प्लीज आस्क, अदरवाइज आई विल प्रोसीड. हाँ सर, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम में क्या क्या आपने ये सी अंडरस्टैंड दिस, हमें ये दिया है 2 mod x minus 1 whole square plus mod of x minus 1 minus 6 equals 0. तो मैं अगर mod of x minus 1 को p लेता तो this would have been 2p square plus p minus 6 is equal to 0, right? Now when you look at this quadratic, here the product is 12. ठीक है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ 2 है ना यहाँ पे. है ना? So product would be -12 and sum would be 1. So product would be -12. नॉर्मली क्या होता है, हमको जब क्वाड्रेटिक देते हैं हमको ये कोएफिशिएंट नहीं दिया होता तो हम डायरेक्टली c by a करते हैं ना. बट यहाँ पे because there is a coefficient of p square, so product will be these two, 6 and 2 and -6, and sum will be your 1. एक इस हिसाब से देखेंगे तो फिर when we break this, this would become 4 and -3. 4 and -3. लेकिन अंडरस्टैंड दिस, 4 and -3 को फिर मैं जब रूट बनाऊंगा तो ये -4 and 3 होगा. समझ में आया? तो फिर उसके बाद by 2 करेंगे. ये मेथड सर ने बताया है लेक्चर में ना, by 2 क्यों करते हैं, क्योंकि कोएफिशिएंट से हम डिवाइड करते हैं. सो रूट्स बिकम -2 and 1.5. So my mod of x minus 1 becomes -2 and 1.5. Mod can never be negative. This will give me two values. That's the idea. Okay. Question number 2. How many integral values of x satisfy this? Isko, whenever you have something like mod of x is less than a, this means x will lie between -a and a. So this will be -5 less than mod of x minus 1 minus 2 less than 5.
this will become -3 less than mod of x minus 1 less than 7, doing a +2. Now this part, this means I can rewrite this as mod of x minus 1 will be lying between 0 and 7, because negative mod kabhi nahi hota na. So from -3 till 0, I will not take it. So we will arrive at this range. Now this range basically means, this means mod of x minus 1 is lying between 7 and -7. Not mod of x minus 1, only x minus 1. Okay, this will become x minus 1. So this will be -6 and 8. That means I have to count from -5 till 7. -5 till 7, manual counting mat karna. Straight away this becomes last term minus first term plus 1. Answer is 13. इसमें किसी को डाउट है क्वेश्चन नंबर 2 में? अगर डाउट हो तो बीच में मेरे को रोक लेना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सम ऑफ 100 टर्म्स. दिस इज द सीरीज दैट वी आर गिवन. सो अगर मैं इसका nth टर्म निकालूं, जनरल टर्म, nth term would be numerator has 1 everywhere, fine. Now you can see I can take a 6 common here. This will become 1 plus 2 plus 3. Take a 6 here, 1 plus 2 plus 3 plus 4. Take a 6 here, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. So in the denominator, we will have a 6. And the pattern is, because this is the first term has 3 terms here. This is the second term has 4 terms here. Third term has 5 terms here. थर्ड टर्म हैज 5 टर्म. सो क्या हो रहा है, फर्स्ट टर्म के लिए 3 हो रहा है, सो +2. सेकेंड टर्म के लिए 4 टर्म्स, +2. सो nth टर्म के लिए दिस विल कंटिन्यू टिल n+2 टर्म्स. दैट्स द फर्स्ट आइडिया. Okay, yeah, 100 by 927, correct. Okay, so this is the general term. Now this part 1 plus 2 plus 3 till n+2 direct formula hai. So this can be written as what? 1 by 6 into n plus 1 by 2. So here it will be n+2 n+3 whole divided by 2, right? So 2 will go to the numerator. This will become 1 by 3 into n+2 into n+3. This can be written as 1 by 3 into 1 by n+2 minus, मैं direct लिख रहा हूं, ठीक है? ये और इसको लेंदी नहीं कर रहा. We will get this. This is our general term. So the summation would be 1 by 3 into 1 by n+2 minus 1 by n+3, and n will start from 1 and it will go till 100. Now इसको जब हम लिखेंगे, internal terms cancel होंगे. So I will be left with a 1 by 3 और 1 यहाँ जाएगा, it will become 1 by 3. 100 यहाँ जाएगा, it will become 103. So this will become 1 by 3 into 100 by 309. The answer would be 100 by 927. Alright, चलो ये 3 क्वेश्चंस में किसी को कुछ डाउट है तो फटाफट पूछ लो, अदरवाइज विल प्रोसीड. तो इसमें जनरल टर्म n+2 ने कैसे निकाला? जनरल टर्म n+2 ऐसे हुआ, देख मेरा जब फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में यहाँ पे मेरे 3 टर्म्स आ रहे हैं, 1 + 2 + 3 है ना, 3 टर्म्स. सो यहाँ पे गैप है 2 का. सेकेंड टर्म के लिए देर आर 4 टर्म्स, गैप है 2 का. थर्ड टर्म के लिए देर आर 5 टर्म्स, गैप है 2 का. सो nth टर्म के लिए गैप 2 होगा, सो ये n+2 तक जाएगा. 2 का गैप मतलब 2 का गैप मतलब ये फर्स्ट टर्म है ना. सी फर्स्ट टर्म मतलब 1. फॉर n = 1 आई हैव 3 टर्म्स हियर, राइट? फॉर n = 2 आई हैव 4 टर्म्स हियर. So यहाँ देख ले, n = 1 I have 3 terms. So n = 2 I have 4 terms. So when n is equal to n, I will have n+2 terms, na?
So the n plus 2 terms will be 1 plus 2 plus 3 till n plus 2. Oh, got it. Got it? ठीक है, चलो next slide. चलो again we have 936. Select करो, 1 मिनट लो, select करो कौन सा आसान है and then solve the questions. Right? प्रीवियस क्वेश्चन में अगर किसी को डाउट है तो अभी पूछ लो, बाकी सब कंटिन्यू विद द क्वेश्चंस. सेशन के बाद भी अगर डाउट रह जाए तो ग्रुप में पूछ लेना कोई भी क्वेश्चन का. सर एक बार प्रीवियस स्लाइड में जा सकते हैं? प्रीवियस स्लाइड में क्या क्वेश्चन में डाउट है कि क्या? नहीं सर, भाई तो नोट नहीं किया लास्ट क्वेश्चन. अब छोड़ दे, मैं ग्रुप में क्वेश्चन शेयर कर दूंगा. यू कंटिन्यू विद दिस ना, क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं. आई सेंड द क्वेश्चंस वाया पीडीएफ. ठीक है, अभी के लिए जस्ट टेक इट एज अ सेक्शनल टेस्ट और बस क्वेश्चंस कर. ठीक है. ओके. क्वेश्चंस लिखने में तो टाइम वेस्ट मत करो, जस्ट सॉल्व द क्वेश्चंस. आई विल शेयर द क्वेश्चंस लेटर.
Okay, so Anubhav, all three correct, huh? Brilliant. Fourth, fifth and sixth. फिफ्थ होना चाहिए था और फोर्थ होना चाहिए था अगर भी सिक्स नहीं कर पा रहे हो. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 4. आंसर हियर इज 4. This would come out as 4. Yeah, 4. Perfect. So a few things, क्योंकि हमें सम निकालने बोला है फर्स्ट 2023 टर्म्स का, तो कुछ ना कुछ पैटर्न आएगा. रैंडम नंबर्स अगर जनरेट होते तो सम नहीं निकाल पाते हम, राइट? दैट इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज वी आर गिवन t of n as t of n minus 1 minus t of n minus 2. इसको ऐसे समझना, whatever the term, what I'll do is I'll take its previous term, because t of n minus 1 refers to the previous term, and then its previous term. Okay, ऐसे पढ़ना, एग्जाम में जल्दी सॉल्व होता है. So t1 is given as 4, fine. t2 is given as 6. Now when I go to t3, इसमें फिर t2 minus t1 मत लिखना, directly इसको समझ जाना. t of n is equal to t of n minus 1, so this will be t2 minus t1. Okay, so this will come out to be 2. t4, similarly t4 would be t3 minus t2, so this will come out to be minus 4. t5 will be minus 4 minus 2, that will be a minus 6. t6 will be a minus 6 plus 4, this would be a minus 2. Okay, so when we see these 6 terms, sum कितना आ रहा है t1 से लेके t6 तक, sum कितना आ रहा है 4 minus 4 cancels out, 6 minus 6 cancels out, 2 minus 2 cancels out. So the sum of every block of 6 terms will give me a 0. That is the idea. So t1 to t6 will give me a 0. Now when we calculate t7, for example, if you want to calculate t7 will be t6 minus t5, minus 2 plus 6. This again will form a series of 4, 6, 2, minus 4, minus 6, minus 2, so on and so forth. So t7 till t12 will give you a 0. इस तरह से होगा. So now we need sum of 2023 terms. So 2023 divided by 6 कर दो, क्योंकि 6 के blocks बनाने हैं. You get a remainder of 1. Remainder of 1 means मेरा जो t of 2023 होगा, that will be equal to the first term. मतलब ऐसा होगा, यहाँ पे मेरा t of 2022 खत्म होगा, यहाँ पे जितने भी 6 हैं, and then ये सारे 0 हो गए. t of 2023, this will be equal to t of 1. So this is nothing but 4. All right, I hope this one is clear. Fourth one. Fifth one. अच्छा, फिफ्थ में एक चीज देखो कि LHS में या 20 LHS में क्या हो रहा है, LHS में log का एडिशन है ना, log प्लस log. और एडिशन में हमारा क्या होता है कि बेस हमारा सेम हो तो वी कैन डू द एडिशन, है ना. So base अगर सेम है, so here the base is 2 root 3, here the base is 144. Now 144 is what? 12 squared, and when you simplify 12, it becomes 2 root 3 का square और उसका square. ये बन रहा है. Basically 144 is 4th power of 2 root 3. All right, 4th power of 2 root 3. That means ये जो 4 log base 144 13 by 4x है, ये 144 क्या बन जाएगा 2 root 3 whole to the power 4, और ये 4 डिनोमिनेटर में जाएगा, 4 by 4 1 बन जाएगा. So ultimately we will have log of 2 root 3 1000 by 13 plus log base 2 root 3 13 by 4x. This is greater than equal to 2. Now the bases are same, so we can multiply them.
मल्टीप्लीकेशन में डायरेक्टली लिख लेना, 13 13 कैंसिल हो जाएगा, 1000 by 4 becomes 250 अपॉन x, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2√3 जो है वो इधर शिफ्ट करेगा, 2√3 स्क्वायर विल बी 12, so x will be less than equal to 250 by 12, 250 by 12 is 20 point something, so x is less than equal to 20 point something, so x will be from 1 till 20, 20 would be the answer. All right, hope this one is clear. Sixth one is a pretty nice question. Sixth one is 14, yeah. So sixth में क्या हो रहा है, in a sequence of 130 terms, sum of any 3 consecutive terms is 150. So the question is saying that T1 plus T2 plus T3 is equal to T2 plus T3 plus T4 will be equal to T3 plus T4 plus T5 and so on. That means if I take these two, then 2 3 2 3 gets cancelled, I get T1 is equal to T4. Similarly, when I take these two, 3 and 4 will get cancelled, I will have T2 is equal to T5. So the pattern is something like this. T3 will become equal to T6. Now T4 will be equal to T7, मतलब यहाँ पे T7 आ जाएगा, ठीक है. So ऐसा हो रहा है कि T1, T2, T3 ये 3 बने, फिर T4 आ जाएगा इसके नीचे, T5 आ जाएगा T2 के नीचे, इधर T6 आ जाएगा, फिर T7, T8, T9 ऐसा आ जाएगा. सारे टर्म्स हम ऐसे रो वाइज कॉलम वाइज लिख सकते हैं. नाउ द 60th term of the sequence is 96. So T of 60 will be equal to what? ये सारे टर्म्स जो हैं ये मल्टीपल ऑफ 3 हैं, तो यहाँ पे T60 आएगा. सो मुझे इनडायरेक्टली बोल रहा है कि T60 मतलब T3 is given as 96, ठीक है, 60th टर्म. और क्या बोला है, 49th टर्म कहाँ आएगा, ये सारे मल्टीपल्स ऑफ 3 है तो 48 आएगा, तो 49 यहाँ पे आएगा. T of 49 will be equal to T of 1. So T of 49 will be equal to T of 1. This is given as 40. मुझे चाहिए 80th टर्म कहाँ आएगा, सारे मल्टीपल ऑफ 3 हैं तो यहाँ पे T81 आना चाहिए. So this should be my T of 80. So T of 80 is as good as T of 2. तो मुझे T3 पता है, T1 पता है, मुझे T2 चाहिए, और मुझे ये भी पता है कि T1 plus T2 plus T3 sum of any 3 consecutive terms is 150. मुझे ये चाहिए 1 plus 3 मुझे यहाँ पे दिया हुआ है, 96 plus 40 is 136. So T2 will be 150 minus 136. Answer would be 14. ठीक है. किसी इन तीनों में से किसी में डाउट है तो पूछ लो फटाफट, अदरवाइज विल प्रोसीड. लास्ट वाला पार्ट कौन सा, ये कॉलम वाला? हाँ, ये जो लास्ट वाला आपने किया है. एक मिनट, मैं यहाँ पे लिख एक्सप्लेनेशन. सी ऐसा है ना, इसमें यहां तक समझ में आया. T1 will be equal to T4. हाँ, वो समझ में. हाँ, T1 will be equal to T4, T2 will be equal to T5, T3 will be equal to T6, ठीक है. और तो बेसिकली ऐसा हो रहा है T1, T2, T3. अब जब T4 है, T4 is equal to T1, तो T4, T5, T6, T7, T8, T9 इस पैटर्न में चल रहा है सारा कुछ, ठीक है. मुझे दिया है 60th टर्म. 60th टर्म मतलब T60 कहाँ आएगा, इस कॉलम में आएगा T60, क्योंकि ये सारे मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं. तो ये T60 मुझे दिया है 96, ठीक, विच इज एज गुड एज सेइंग कि मुझे T3 दिया है 96. समझ में आया ये वाला? वही कंफ्यूजिंग था कि मतलब अगर T60 96 है तो T3 भी 96 होगा क्या, मतलब? हाँ, क्योंकि मेरे टर्म्स क्या बन रहे हैं, ब्लॉक्स ऑफ 3 बना रहा हूं ना मैं.
T1 T2 T3 बना, फिर T4 क्योंकि T1 के साथ है तो उसी कॉलम में मैं नीचे लिख सकता हूं ना, T4 T5 T6 T7 T8 T9, हर हर 3 टर्म्स पैटर्न में बनेंगे T1 T2 T3 के। क्लियर हो रहा है? हाँ हाँ, अब समझ में आ रहा है। हाँ, तो फिर 49th टर्म चाहिए। अब 49th टर्म कहां पे प्लेस करेगा? 48th टर्म होता तो मल्टीपल ऑफ 3 में जाता। 48 मतलब मेरा यहाँ T48 आएगा, 49 मतलब इधर आ जाएगा T ऑफ 49। अब T ऑफ 49 मतलब T ऑफ 1, T ऑफ 1 इज गिवन एज 40, इन दोनों का एडिशन 136 है, और पता है कि T1 T2 T3 इज 150। अब समझ में आया? यस सर, गॉट इट गॉट इट। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड। चलो स्टार्ट करो, वी विल डिस्कस एट 9:57।
ओके, आंसर्स 7th वाला आया किसी का? हाँ शशांक, 8 इज करेक्ट। 8th और 9th तो होना चाहिए था, 7 थोड़ा सा ट्रिकी है, पर 8th और 9th होना चाहिए था। सो या इट इज 2, या Prajwal, right, correct. So let's start with the easiest of the lot. 9th one, find the sum of all values of p that satisfy the equations. The equations are given. अच्छा, यहाँ पे एक ऑब्जर्व करने की चीज है कि यहाँ मॉड p minus 1 दिया हुआ है, and here also we have mod of p minus 1. So we can do a bit of replacement, right? So this will become what? Mod of p minus 1 will be equal to 2 minus q. So this mod of p minus 1 will be replaced with 2 minus q. So our equation becomes 2 minus q plus mod of q minus 2 is equal to 1. Now the critical point would be, let's say when q is greater than equal to 2. Now when q is greater than equal to 2, let me write it here. When q is greater than equal to 2, so the equation will become 2 minus q plus q minus 2 is equal to 1. Cancels out, we have 0 equals 1. So this case is rejected altogether. Then when we solve for q is less than 2, this will remain as it is. यहां से क्या बाहर आएगा? Minus of q minus 2. All right. So because mod x becomes minus x when x is less than 0, that funda, right? So this becomes 4 minus 2q equals 1. Q becomes 3 by 2. When q becomes 3 by 2, when we plug it here, this becomes 2 minus 3 by 2, that is 0.5. All right, so mod of p minus 1, we are getting mod of p minus 1 is equal to 0.5. So p will be equal to 1.5 or 0.5. The sum of values of p would be. Pretty straightforward question. All right. Okay. Question number 8. इसमें अगर numbers, अगर terms decode करें, so the first one is 8 by 5 whole squared plus the second one is 12 by 5 whole squared. The third one is 16 by 5 whole squared. Now the fourth one is 4 square. So if I write it in the form of by 5, okay, or by 5 whole square, this I can write this as what? 20 by 5 whole squared plus 24 by 5 whole square. This is the series. Now in this series, what we can take out common denominator, we can take out 5 square common. From the numerator, we have 8 square, 12 square, 16 square, 20 square. So every term is a multiple of 4. So if I take a 4 out, overall of 4 square will come out. Because इसमें से अगर मैं 4 निकालूंगा तो फिर वो 4 square बाहर आएगा, right? I can take out a 4 square. Now what will we be left with? We will be left with 8 square में से मैंने 4 square निकाल दिया. So we will be left with 2 square. 12 square से 4 square निकाल दिया, we will have 3 square. And now you can see the pattern starts generating. Now here कहां तक जाओगे? How do you know कि 11 तक जाना है? So understand this. For the first term, it is 2. For the second term, it is 3. For the fourth term, or for the third term, it is 4. So for the 10th term, it will be 11 squared. This is where we will end up with. So we are getting 16 by 25. Now sum of this series. This is basically 1 square plus 2 square till 11 squared, but we will subtract a 1 square. All right, so this will become 16 by 25. This will be n into n plus 1, n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 minus 1.
This is a 2, this is a 46. So we will have 16 by 25 into 46 into 11 is 506. 506 minus 1 is 505. 5 gets cancelled. This is 101. So M is what? 101. This is your answer. Easy tha. Once you decoded the terms, फिर आसान था. 7th वाला हुआ क्या किसी का? बहुत अच्छा क्वेश्चन है 7th वाला. नहीं हुआ है. 7th में. Okay, so look at this. This is 1 plus 4 by n square minus 4. So if we simplify this, this will become n square minus 4 plus 4 by n square minus 4, which is nothing but n square by n square minus 4. Now this can be written as, यहाँ पे trick है. This can be written as n by n minus 2 into n by n plus 2. Denominator is a square minus b square form and numerator is n square, right? So this is the format. So we could have said that t of n is equal to n by n minus 2 into n by n plus 2 into t of n minus 1. Fine. Now t of 3 क्या होगा? Understand this pattern. Exam में जल्दी लिख पाओ. n होता है तो क्या होता है? ऊपर you put 2n, so it will be 3 by something, 3 by something. Denominator में कितना है? 2 का गैप है, so this will be a 1. इधर plus 2 है, so this will be a 5. This is t2. Okay. Similarly, t4 would be, you put a 4 here, 2 का गैप है, तो this is 2, 2 का गैप है, तो this is 6 into यहाँ पे t3 होगा. But what is T3? T3 is obtained. So this is 4 by 2 into 4 by 6 into T3 is 3 by 1 into 3 by 5 into T2. Now these terms, इनको थोड़ा सा rearrange करेंगे. किस तरह से rearrange करेंगे? कि इस 3 by 1 को we will club with 4 by 2. So 3 by 1, 4 by 2 ऐसे क्लब करेंगे और 3 by 5 will be clubbed with 4 by 6. We will put the value of t2 at the end. ठीक है, ये वाला समझो. इसको प्लग किया इसके साथ और इसको प्लग किया इसके साथ. So we have 3 by 1, 4 by 2, 3 by 5, 4 by 6 and t2. Now t5. To understand the pattern, T5 would be what? Now see this. T4 के लिए there are 2 terms in each bracket. So T5 के लिए there will be 3 terms in each bracket. और वो terms कैसे होंगे? Notice the denominator. The denominator has 2 terms starting from 1, right? So here we will have 1, we will have 2, we will have 3. Okay, and the gap is 2. So this will become 3, this will become 4, this will become 5. Done. First bracket is done. Second bracket में क्या हो रहा है? Second bracket में we are starting from 3 and for 4 we are writing 2 terms. So for 5 we will write 3 terms. The 3 terms will be 3, 4, 5. And if you look at the gap here, this is a gap of 2. So this is 5, 6, 7. And then you have a T2. So this is the pattern. इस pattern से अगर जाके T20 अगर देखेंगे, hold on. So T20 will become so T20 will become how much? T20 है तो 5 के लिए there are 3 terms, 4 के लिए there are 2 terms in each bracket. So here we will have 18 terms. For 20 we will have 18 terms. और 18 terms कैसे होगा? यहाँ पे 1, 2, 3 से शुरू हो रहा है. So 1, 2, 3 till 18. And then the numerator is plus 2. Plus 2 मतलब 3, 4, 5 plus 2 मतलब 20 तक जाएगा.
ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 टर्म्स लेके हम लोग जा रहे हैं और सिमेट्रिक है एक तरह से। इफ यू लुक एट दिस, यू हैव 3 4 5, ऊपर भी 3 4 5 आएगा, है ना। यहाँ पे देखो तो T4 में 3 4 आ रहा है, 3 4 आ रहा है। सो इन द न्यूमरेटर we will have 3 4 5 till 20, and in the denominator we will have, denominator में क्या हो रहा है, +2 +2 +2 हो रहा है। so this is 5 6 7 and we will go till 22। ये फॉर्मेट होगा। अब इस फॉर्मेट में कैंसलेशन होगा। कैंसलेशन कैसे होगा, डिनोमिनेटर हैज 1 till 18 and here you have 3 till 20। so so the cancellation would be like this: 3 till 18 everything will get cancelled, 3 till 18 everything will get cancelled, we will be left with 19 into 20, and with respect to this and this we can say that 5 till 20 will get cancelled, we will be left with 21, and 5 till 20 will be cancelled, we will be left with 3 and 4. So this will be 3 into 4 by 1 into 2 into 19 into 20 by 21 into 22. And then last में we have a T2, T2 is 3 by 4. फिर अभी normal cancellation हो जाएगा, 4 4 चला जाएगा, this will be a 7, this is a 10, और क्या कैंसिल हो रहा है, 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 11 2 5, so we have 3 into 19 into 5 by 77, so 57 into 5, this will be 285 by 77। pretty tricky question, numbers को क्लब करने वाला जो फंडा था, that is the only way out here, numbers को क्लब करके। थोड़ा मुश्किल है, I'll शेयर द रिकॉर्डिंग, सो इस क्वेश्चन को बाद में देख लेना, ठीक है। किसी को कुछ डाउट है तो बोलो, अदरवाइज लास्ट सेट एक सॉल्व करते हैं। 7th वाज प्रीटी ट्रिकी गाइस, 8th और 9th होना चाहिए था। अभी के टाइम के प्रिपरेशन के हिसाब से 8th और 9th तुम लोगों से हो जाना चाहिए था। ओके, सो नो डाउट्स, नेक्स्ट स्लाइड शेयर करता हूं। नॉट दिस वन, लेट्स सॉल्व, या ठीक है, यही वाला सॉल्व करते हैं, 10 11 12। सो 10 24 पे we will discuss।
ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। क्या क्या आंसर्स आए? m plus n equals 3, perfect. 12 is 35. 5 and 3. Okay. 11 is 3. Yeah, 11 is 3. Okay, so let's start with 12. Okay, let's start with this question. Directly हम देख सकते हैं कि this is base 2, this is base 2, so addition होके directly मैं ये लिख सकता हूँ 5a plus 3b multiplied with 5a minus 3b will be equal to what? 2 shift 10 is, yeah, Naveen minus आएगा, but absolute value is correct, 34 आएगा. Okay, so okay, in question number 12 base is same, so directly हम लिख सकते हैं 5a plus 3b into 5a minus 3b will be equal to 2 to the power 10. 2 shift होके यहाँ जाएगा ना. Now यहाँ पे अब इसको कैसे डिकोड करना है? Now here, because a and b are integers, this will be an integer and this also will be an integer, right? First thing. Second thing is कि we are splitting 2 to the power 10 into, we are writing 2 to the power 10 as a product of two terms, right? So basically factors involved होंगे, है ना? So 2 to the power 10, this will have 11 factors, right? अच्छा, now another thing to observe is एक फैक्टर मेरा 5a plus 3b है और एक फैक्टर 5a minus 3b है. इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है? 10a, राइट? ये मेरा 10a आ जाता है. What does this 10a mean? This means that we will have to split 2 to the power 10 into two numbers such that their sum should be divisible by 10. This is the funda. Their sum should be divisible by 10 क्योंकि add करने से 10a आ रहा है, so 10a has to be divisible by 10. So 5a plus 3b and 5a minus 3b, their addition should be divisible by 10. So factorize अगर करें 2 to the power 10 को, क्या क्या आएगा? 1 into 2 to the power 10, 1024. Is this sum divisible by 10? No, so this won't be the case. The next case would be 2 into 512. Is this divisible by 10? No. The next would be 2 to the power 2, which is 4. 4 into 256. Is this divisible by 10? Yes, it is. So this is one case. Next क्या आ जाएगा? 2 to the power 3. 8 into 128. This is not divisible by 10. उसके बाद क्या आ जाएगा? 16. 16 into 64. Is this divisible by 10? Yes. So this is another solution. Proceeding ahead, 32. 32 into 32 आएगा क्या? नहीं आएगा. अब जब हम आगे बढ़ते हैं, when we proceed, it will become 64 into 16. Yes, this will be valid. And then as you proceed along, you will see that 256 into 4. This will also be valid. So there are 4 possibilities. 1, 2, 3, 4. So the answer would be 4. All right. Sum ka. Another thing that you could say is ki, acha, 5a plus 3b is there and 5a minus 3b is there. What if I take the difference? When I take the difference, it will give me 6b. This means the difference should be divisible by 6. However you want to test. Difference should be divisible by 6. So if I take 4 into 256, the difference is 252 divisible by 6. 16 and 64, the difference is 48 divisible by 6, divisible by 6, divisible by 6. However you want to solve, the answer would still be 4. Okay, I hope this one is clear. Now let's solve the 11th one. Now 11th one says we are given an equation. It has real and equal roots. And when it has real and equal roots, you can see that this is a quadratic in X.
because we have x square here, we have an x here, so this is a quadratic in x. Real and equal roots means b square should be equal to 4ac. Now when we are doing b square here, you can see that this is a multiple of 3, this is a multiple of 3. Fine. When we do 4ac, 4ac is also a multiple of 3 because we have 3 square here, right? So what I can do is I can straight away remove a 3 directly while calculating, and what I'll write is yahan se 3 hataya, 27 se 3 hataya, we will have 9 into 3 to the power 1 by p minus 5. इसका जब हम square करेंगे, this will be equal to 4 into, now a is a 9 here, so this is a 9 here and this is a 4 here, but this 9 has been cancelled क्योंकि यहां से सी यहां से जब मैं एक 3 निकाल रहा हूं, इस टर्म से जब मैं एक 3 निकाल रहा हूं, ठीक है, 3 चले जाएगा, सो यहाँ पे 9 into 3 to the power 1 by p minus 5 होगा, और जब स्क्वायर हो जाएगा तो 3 स्क्वायर बन जाएगा और ये बन जाएगा, राइट? सो इवेंचुअली 9 कैंसिल हो जाएगा. सो माय आइडिया इज दिस कि 9 into 3 to the power 1 by p minus 5 whole squared should be equal to 4 into 4, 16. छोटे छोटे स्टेप्स हैं, आप रिड्यूस कर सकते हो एग्जाम में पेंसिल वर्क, राइट? सो डायरेक्टली वी विल गेट दिस. नाउ व्हेन वी स्क्वायर दिस, 9 square is 81 into 3 to the power 2 by p plus 25 5 square minus 2 into a into b, 2 into 9 is 18, 18 into 5 is 90, 90 into 3 to the power 1 by p. This will give me a 16, 16 को LHS में लेके जाएंगे, so this will be 81 into 3 to the power 2 by p, 25 minus 16 is 9, minus 90 into 3 to the power 1 by p, this is equal to 0. Again we can cancel a 9, we will be left with 9 into 3 to the power 2 by p plus 1 minus 10 into 3 to the power 1 by p, this is equal to 0. This again is a quadratic equation. इसको फिर solve करेंगे तो t लेके कर सकते हैं. This will become 9t square plus 1 minus 10 into t is equal to 0. I am assuming 3 to the power 1 by p is equal to t. This is my assumption. अगर directly नहीं कर पाते तो ठीक है. So we have 9t square minus 10t plus 1 equals 0. The product should be 9 and sum should be minus 10. So minus 9 और minus 1 ले सकते हैं. रूट्स जब बनेगा तो 9 और 1 बनेगा, लेकिन कोएफिशिएंट में 9 मल्टीप्लाइड है तो यहाँ by 9 हो जाएगा. So the roots are basically 1 and 1 by 9. And what is this equal to? This is equal to t. T was 3 to the power 1 by p. Now it is given that 3 to the power 1 by p is not equal to 1, so we will reject this case. So we are getting 3 to the power 1 by p is equal to 1 by 9. 1 by 9 is 3 to the power minus 2. Equating the powers, we will have 1 by p equals minus 2. So p will be equal to minus 1 by 2. P is equal to minus 1 by 2. So this is minus m by n is minus 1 by 2. 1 plus 2. The answer would be 3. थोड़ा सा लेंदी है पर सिंपल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है. b square equals 4ac वाला फंडा, रियल एंड इक्वल रूट्स. राइट, ओके. 10th one फटाफट बता दे रहा हूँ. 10th वाला -34, या -34. So it is given that alpha, beta, lambda and omega, these are in GP. ये GP में है तो a, AR square, AR cube, ये हो गया. Now alpha beta are the roots of this, so that means alpha plus beta is equal to minus b by a 1 आएगा, and alpha beta is equal to p, ये आएगा. और lambda and omega are the roots of equation this, so lambda plus omega, this is 4 आएगा. Sum of roots or product of roots is q.
इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं मैं, राइट टू ओमेगा इज क्यू। फाइन, नाउ अल्फा इज, यहाँ पे अल्फा इज ए एंड बीटा इज ए आर, सो a plus ar is equal to 1. यहाँ पे this is ar square plus ar cube is equal to 4. ये है, ये दो इक्वेशंस मिल गए हमें। सो a plus ar is equal to 1, और यहां से हमको मिल रहा है, अगर मैंने r स्क्वायर कॉमन लिया तो a plus ar is equal to 4। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो r स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4, सो r विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 2। ये एक मिला हमको। इसको जब हम प्लग कर देंगे इस इक्वेशन में, सो वी कैन गेट टू वैल्यूज ऑफ a। सो a into 1 plus r is equal to 1, so a will be equal to 1 plus r, 1 plus 2, a will be equal to 1 by 3, और a will be equal to -1। दो वैल्यूज आ जाएंगे। अभी हमें निकालना है फाइंड द सम ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ p एंड q। सो p प्लस q सम निकालना है ना। p प्लस q क्या हो जाएगा, p इज अल्फा बीटा, दिस इज लैम्डा ओमेगा, अल्फा इज a into ar and this is ar square into ar cube. So this becomes a square r plus a square r to the power 5. Ultimately this is a square r into 1 plus r to the power 4. This is the idea. So इसमें दो वैल्यूज आएंगे। जब a को 1/3 प्लग करेंगे, a को 1/3 प्लग किया तो 1/9 into 1/3 के लिए +2 है, 1/9 into 2 into 1 plus 2 to the power 4, this is how much, ये 17। तो ये इंटीग्रल नहीं है, तो यू कैन इग्नोर दिस, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या आएगा, a इज इक्वल टू -1, -1 मतलब a स्क्वायर इज 1 इंटू r इज -1 इंटू 1 प्लस r टू द पावर 4, r टू द पावर 4 इज 16। कुछ गलत किया है, हाँ यहाँ पे -2 होगा और यहाँ पे 16 होगा, सो दिस विल कम आउट टू बी -34। दिस इज योर आंसर। कैट के हिसाब से नहीं दिया है कि नेगेटिव वैल्यू तो इनपुट नहीं कर सकते, बट दीज आर जस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इसीलिए आंसर इज -34। ऑलराइट, किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, और एक लास्ट सेट करना है क्या, या शैल वी रैप अप? क्वेश्चन नंबर 11 में हाँ, p का वैल्यू कैसे, वो लास्ट में क्या किया आपने? यहाँ एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन। यहाँ पे कर दे। सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac करके सारा कैंसिलेशन करके हमारा आया था 9 into 3 to the power 2 by p plus 1 minus 10 into 3 to the power 1 by p। यहाँ तक समझ में आया था? हाँ सर, इतना हाँ। तक समझ में आया था, बस लास्ट में जब 9/9 वाला फंडा, उसके बाद वाला बेसिकली जब कंपेयर अच्छा, किया आपने कंपेयर किया, p to the power 1 by p equals to 1 किया एक बार, अच्छा फिर अच्छा अच्छा cancel- अच्छा 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 अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है। सो 3 to the power 1 by p मेरा ये आया था ना, 3 to the power 1 by p। मेरे वैल्यूज यहाँ पे मेरा -9 और -1 था, लेकिन जब रूट्स बनाएंगे तो 9 और 1 बनेगा, क्योंकि कोएफिशिएंट में 9 है तो डिवाइड करके 1 और 1/9 आया। ठीक है, नाउ इट इज गिवन दैट 3 to the power p इज नॉट इक्वल टू 1, सो ये वैल्यू नहीं लेंगे। सो अल्टीमेटली आया 3 to the power 1 by p is equal to 1/9। 1/9 क्या होता है, 1/9 is 3 to the power -2 ना। yes तो फिर इन दोनों को जब कंपेयर किया तो बेसेस आर सेम, तो पावर्स नीड टू बी इक्वल, सो 1 by p should be equal to -2, p is equal to -1/2, ये वैल्यू आया। क्वेश्चन नंबर 10 में जो मतलब आफ्टर a का वैल्यू r का वैल्यू निकला, फिर a का वैल्यू a का वैल्यू निकालने के लिए हम ये सम ऑफ रूट्स वाला जो दो इक्वेशन मिला उसमें प्लग कर सकते हैं ना r का वैल्यू, तो a आ जाएगा उससे।
फिर उसके बाद क्या क्या ये जो p प्लस क्यू का अच्छा बस वैल्यू पुट किया? हाँ बस वैल्यू पुट किया। अल्फा मेरा कितना है, ये सब जीपी में है ना, तो अल्फा इज ए, बीटा इज ए आर, लैम्बडा इज ए आर स्क्वायर एंड ओमेगा और वट एवर दिस इज ए आर क्यूब। सिंपल मल्टीप्लाई किया, ए इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब, ये बना। तो इसमें से फिर कॉमन लेके मेरा अल्टीमेटली एक्सप्रेशन ये आया। ये जब एक्सप्रेशन आया तो इसमें फिर दो पॉसिबिलिटीज होंगी, जब आर मेरा +2 है, ए मेरा 1/3 आ रहा है, और आर जब -2 है, ए मेरा -1 आ रहा है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज को प्लग करके देखा, एक में मेरा फ्रैक्शनल आ रहा है और एक में मेरा इंटीग्रल आ रहा है। क्वेश्चन बोला है सम ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज, तो ये वाला केस लेके करेंगे, इसमें आएगा इंटीग्रल। गॉट इट। गॉट इट, ठीक है। एक लास्ट सेट करना है, बोलो, फटाफट खत्म कर लेते हैं एक। ठीक है, गिव इट अ ट्राई, लास्ट सेट है, 15 क्वेश्चंस हो जाएंगे ना। ठीक है, ये वाला कर लो, इसमें दो आसान क्वेश्चंस हैं, एप्लीकेशन ऑफ लॉग्स कर लो। 10:40 हो रहा है ना, so 10 मिनट दे रहा हूँ, विल डिस्कस एट 10:50। 16th वाला लास्ट में करना, 16th वाला अभी मत करो, ठीक है। पहले आई जस्ट हेल्प यू आउट, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 करो, 17 और 18 करो, 16th को लिख लो। 16 इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, ये बाद में ट्राई करना, विल डिस्कस इट इन द ग्रुप। पहले 17 और 18 करो।
लास्ट सेट है, तो जिसका जो आंसर आ जाए एक बारी मैसेज करना। लेट्स सी 17 और 18 ना, 16 मत अटेम्प्ट करो, 16 बाद में करना। जब रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा तो क्वेश्चन देके यू कैन सॉल्व इट देन। 17th is 4 4 तो 4 आ रहा है। लेट मी चेक ऑन अभी। दिस इज 3 17, हाँ 17 का 16 आ रहा है। आई गेस 17 का 16 आएगा नवीन। 17 का 16 आएगा। 18 का रत्नेश इज सेइंग 2। ओके, या 18th is 2। ठीक है, 1 more minute, उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, 16th वाला बाद में ट्राई करना यार, इट इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। One more minute. Okay, so let's discuss the final set. Question number 17. For question number 17, you need to know the property that a log base bc can be written as c log base b a. You can switch these two. If you know this property, then this question is a very simple one. Okay, so 2x to the power log base 4 3 plus 3 to the power log base 4x is equal to 27. यहां पे स्विच करेंगे, ये x और 3 को स्विच करेंगे. So this can be written as 2 into 3 to the power log base 4x plus 3 to the power log base 4x. This is equal to 27. Left hand side mein we can take 3 to the power log base 4x common. This will become 3. 2 plus 1 will become 3. This is 27. This will cancel. This is 9 is 3 square. We will equate these two. Log of x base 4 is equal to 2. X is equal to 16. The answer. All right. You need to know this property. Another way of looking at this property is, एक होता है ना, whenever we do this, a log base a n is equal to 1. क्यों होता है? क्योंकि अगर मैं switch कर दूं तो it becomes n log base a and log a base a is 1. So this is equal to n, right? So we can do this. Anyway, so this is n, actually. This is n. All right. Question number 18, the last one. मैं ये देख सकता हूँ, यहाँ base 3 है, यहाँ base 3 है, तो 2 can be shifted to the power. This becomes square. So we will have log base 3 x square into x square minus 3. Fine. RHS mein there is log base 3 here. Now this part, 5 log base 5 log base 3 8. This is of this format.
this can be directly written as log base 3 8. So this becomes log base 3 8 and bases are same. So we will multiply 0.5 with 8, we will get a 4. है ना? So directly we can write log base 3 x square into x square minus 3 is equal to log base 3 4. This means x square into x square minus 3 is equal to 4. इसमें x square is equal to t लेके ट्रेडिशनल क्वाड्रेटिक से भी सॉल्व कर सकते हैं. दूसरा तरीका ये है, if you look at this, the gap here is 3 between x square and x square minus 3. The gap here is 3, so we can split 4 as 1 into 4. Here also the gap is of 3. So now x square की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी या 4 होगी? Out of x square and x square minus 3, x square is the bigger number. This is the bigger number. So x square should be equated with 4. X comes out to be plus and minus 2. But hold on. If you take x equals to minus 2, this becomes negative. Log does not exist. So for log base 3x, x has to be greater than 0, right? So we can't take minus 2. So x will be equal to 2. This is our solution. So the answer would be 2. All right, chalo guys, let's wrap it up. कुछ अगर पूछना है तो पूछो. Otherwise, हाँ बोलो. तो वो 5 log 5 वाला वो क्या है? हाँ, ये एक प्रॉपर्टी है. a log बेस ए n, जब ऐसा फॉर्मेट होता है हम इसको डायरेक्टली n लिख सकते हैं. तो उसके बाद वो मतलब log 3/8 मतलब पावर में नहीं रहा क्या? मतलब वही समझ में. नहीं ये a to the power n नहीं है रे. This is not a to the power n. ये a log बेस है और सेम लेवल पे लिखा होता है. You understand? तो नो वो जो उसके बाद मतलब जो log base 3 8 है, हाँ, वो नीचे आ जाता है. हाँ वो नीचे आ जाएगा. तो मेरा ये बन जाएगा log base 3 0.5 प्लस log base 3 8 बना. ओके सर, गॉट इट. है ना? अभी फिर 4 बन जाएगा और फिर बाकी सारा कुछ. ठीक है. ऑलराइट, एनीथिंग एल्स? अगर किसी को और कुछ नहीं पूछना तो यू कैन लीव. आई विल वेट हियर फॉर 5 मिनट्स. किसी को अगर कुछ और पूछना है तो, एंड देन आई विल एंड द सेशन. ऑलराइट. So this is done. ठीक है. It seems nobody has any doubt, so we'll end the session here. All right, चलो, bye everyone. Bye bye. वेलकम. यहाँ वेलकम. चलो, गुड नाइट. गुड नाइट क्या आता हूँ मैं ग्रुप में. बाय बाय बाय.